Okay, you can start. Okay, good afternoon, everyone. My name is Noman Kashmani from Competitive Examination Cell. And for today's session, along with me, Akshay Patel sir, as well as the one of more our director, Devendra Rajput sir is present over here. So, what is the objective for the today's session? As you know that GPSC announced number of vacancies before 15 days, and today was the last date to apply for that exam. Before 1 o'clock, many of the students have already applied for this exam. So today we are going to discuss that how to prepare or how to be in the top list of this particular examination. So the objective of today's session is to aware you about the preparation strategy as well as the basics of the GPSC examination and how you can start preparation for GPSC 2020-23 and onwards as well as for the UPSC examination. That's why the title of the today's session is to how to crack GPSC with the competitive examination self. So let's start with the first thing that what does competitive examination cell do? Many of the aspirant were pursuing their preparations along with the CEC. They know about the competitive examination cell. Basically, we are preparing our PU students, then PU alumni, as well as the non-PU students who want to pursue their career in government job or the government sector. See, there are number of opportunities are government sector, and there is no number of perks and privilege are in the government sector. But the thing is that most of the students are not aware about the different government opportunities or government job opportunities. And if they aware about the opportunities, they don't know how to start. So the main objective or the main function of the competitive examination cell is to provide the awareness to the students about the different government job opportunities as well as prepare those students who are interested in this sector. So we are preparing the students basically for the civil service examination. Whenever initially we started the sale, we started with the civil service examination, but nowadays we are also preparing the students for different examination like staff selection commission, SSC, railway recruitment board, RRB. Through star batch we have launched one our batch, star batch, in which you can like prepare for different examination whose syllabus is same. Then we are also preparing the students for the judiciary service. Then we are also preparing the students for the nursing service. So we have number of courses in which we are preparing the students for the government sector. So now today, just we are going to discuss about the civil service examination and UPSC as well as the GPSC, particularly GPSC. So first of all, we need to understand that we are using the word GPSC or UPSC like Union Public Service Commission or the Gujarat Public Service Commission. So this Public Service Commission is basically defined or to recruit the people. Like if I'm talking about the UPSC, it recruit the employee for the central government, while the GPSC is for the state government. Same way, suppose if you are from any other state, Rajasthan, so there is a Rajasthan Public Service Commission. If you are from Madhya Pradesh, so there is a Madhya Pradesh Service Commission, Public Service Commission. So whenever we are talking about the civil service examination or the civil services are the most reputed services of the central as well as the state government. I can give you few example like Indian Administrative Service, IAS officer. Then if I'm talking about the IFS officer and the IPS officer, these all are recruited through the UPSC, Union Public Service Commission. While if I'm talking about the Deputy Collector, DYSP, then Mamlatdar, State Tax Commissioner, these all posts are appointed or recruited by the GPSC. So this is a basic difference between the UPSC and the GPSC. GPSC particularly responsible for the state, while the UPSC for the central government. Now, what kind of examinations, what kind of different examinations conducted by the GPSC or they are responsible for conducting examinations? So the most reputed and the top most exam of the GPSC is the Gujarat Administrative Service or the Gujarat Civil Service. और जिसकी हमने बात की कि like the last date to apply for this examination was 9th of September till 1 p.m. So the deadline is already passed before
2 hours, or we can say 1.5 hour. Those who are already filled the form, they are eligible to apply for this examination, for eligible to appear for this examination this year. But suppose those who are in the pre-final year or the second year of their graduation, they can get this opportunity in upcoming years, in a say next year 2024 2025 subsequently, because GPSC published this examination or this form every year in the month of October, September, October, or the examination is in the month of January. So always you need to prepare, or always you need to ready before the examinations form out. Okay. So suppose if you clear this examination, so for which post you are eligible? So deputy collector class 1, deputy superintendent of police again class 1, prohibition and excise officer class 1, assistant state tax commissioner. Now, like this is a state tax. So many of the students are like, this is only for commerce background. No, this is not only for commerce background. And any graduate can be part of this state tax commissioner. It is for both GST and IT. So based on your merit, this post will be going to allotted to you. Now, district registrar class, assistant district registrar, section officer, mamlatdar, assistant director, labor officer, TDO, and DLRO. DLR, I mean district land record inspector. So there are number of vacancies are there. In the pay scale for this particular examination, once you clear this examination, and if you're appointed in any of the posts, the pay scale is around 56,100 to 1,77,500 according to 7th pay commission. And the stages of the examination are prelims, mains, and interview. If you first of all you need to appear for the preliminary examinations. If you crack the preliminary examinations, you are eligible to appear for the mains, and at the last there is an interview of 100 marks. So your final merit will be from mains plus interview. Now, if your age is 20-year minimum age, and if you're in the general category, if your age is 35-year, then you are eligible for this examination. Now, if you are in the final year of graduation, then you are also eligible for the examination. So no need to finish, no need to wait to finish your graduation. If you are final year in graduation, then you are eligible to appear for this examination. Now, suppose this is the only one examination of GPSC. GPSC is a recruiting agency. It conduct number of examinations. Suppose anyone from engineering background, like it is mechanical, civil, electrical, then they are eligible for this different examination like industrial officer, manager raw material, or we can say that Gujarat Engineering Service, or like a executive engineering class 1 and deputy executive class 2. And see the salary structure in almost similar. 7th pay scale is there. So, and most of the examinations conduct 3 stages: prelims, mains, and interview. But suppose if you are appearing for class 3 examination, DYSO and like that, state tax inspector. So there are only 2 stages, prelims and mains. In class 3, there is no interview. So no need to appear to go for the interview process. You need to just clear prelims as well as the mains. Now, many of the aspirant are just want to go with the, we can say the वर्दी चाहिए उनको, पुलिस वाला बनना है. So like there is a police inspector unarmed vacancies. There are 4 stages because police inspector also need to pass a fitness test, physical fitness test. So this is not only about to write an examination. You also need to pass one fitness test. Like there are few conditions. पहले तो आपका इतना हाइट होना चाहिए एंड वेट होना चाहिए. देन सेकंड थिंग, you need to they are providing some basic fitness criteria कि आपका chest का measurement इतना होना चाहिए. You need to finish a few kilometer of the race in some amount of time. Okay, so these are the few criteria which you must need to fulfill, and then you need to appear for the prelim, mains, and the interview. If you clear all the 4 stages, then you are eligible to become the police inspector in Gujarat Police. Okay. Then there is one more, deputy section officer, DYSO, or we can say the deputy mamlatdar. Now, DYSO for 3 different stages, like DYSO for Sachivalay, which is situated in Gandhinagar, DYSO for GPSC, and DYSO for Vidhan Sabha, state legislature. Okay, so here you can see this in like if you are appointing in any of the posts like police inspector or GPSC class 1 2, your transfer will be there after few years.
in Gujarat itself. But if you are going for the DYSO, this is the exam or this is the post. आप लाइफ टाइम तब एक ही जगह पे रहोगे इन गांधीनगर. So if you want like a post, like a permanent post at a one place, and especially for women's candidate who require the permanent post, this is the best exam. DYS and deputy मामलतदार, जहाँ पे बार बार आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपका एक ही जगह पे मतलब आपका पोस्टिंग होगा, विच इज नोन एज अ गांधीनगर सचिवालय, आइदर जीपीएससी और विधानसभा. और इस बार इसका एग्जाम होने वाला है 16th of October इन नेक्स्ट मंथ. सो मोस्ट द फॉर्म पहले ही आ चुके थे 4-5 महीने पहले. अभी नेक्स्ट मंथ में उसका एग्जामिनेशन है. नाउ नेक्स्ट वैकेंसी इज अ स्टेट टैक्स ऑफिसर. Again, I ask you that it is not limited to only commerce background or MBA, BCom, BBA background. Any graduate can apply for this examination. And the last one is the RTO. If you want to become an RTO inspector, then if you are from graduation from mechanical background, then you are eligible to become this RTO inspector. Okay, so these are the only few vacancies. Suppose if you are from the Ayurveda background, medical background, homeopathy background, so there are number of vacancies for assistant professor in government Ayurvedic college, or assistant or medical officer in Ayurveda hospital or homeopathy hospital, or if you are MBBS background, there are number of opportunities. If you are from pharmacy background, then food and drug inspector. If you are nursing background, so there are number of vacancies for nursing itself. So these are the few topmost vacancies. Other vacancies also published by the GPSC. And the beauty of all the examination is that one paper, if you are in the appear for any technical examination also, there is a one paper from the non-technical background. And the syllabus of all the non-technical background is almost similar. So suppose if you are appearing for any of the exam, if you are like good enough in quant, reasoning, general awareness, and general English, then you can crack any of the non-technical paper. This is not difficult. So you need to prepare for any of the single examination, and you are eligible to appear for number of examination. So this is the beauty of this exam, that एक बार preparations करो और आप जो एग्जाम देना चाहते हो एक ही प्रिपरेशंस के साथ वो एग्जाम दे सकते हो. Now, class one, as I mentioned that already the form was out at 25th August, and the last date was around 9th of September. आज ही था 1 बजे तक, जो ऑलरेडी पास हो चुका है. तो जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है, इट इज वेल एंड गुड. बट those who are in the pre-final year, and again I'm repeating, so they can also start their preparation, because same on the same time in the next year फिर से वापस फॉर्म आएंगे, वापस से एग्जाम होगा. And the preliminary examination for this year is on 8th of January 2023. Sunday है, दो पेपर रहते from 10 to 1 and 3 to 6. I will explain it in the upcoming slide. If you clear, and the result will be published by month of February for the preliminary exam. And if you are eligible, or if you crack this examination, then you are eligible to appear for the mains examination in April. Okay, so if you crack the April examination, then finally interview in the next July. So we see right now we are talking, or we are meeting over here in the month of September, but by next July, August, within a span of 1 year, whole process will going to be finished, and a new cycle or new recruitment will be published. So this is the main thing which you need to understand, that this is a regularity GPSC follows. एक बार एग्जाम का कैलेंडर पब्लिश हुआ, डेट पब्लिश हुई, एग्जाम टाइम पे हो जाएगा, रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा, रिक्रूटमेंट टाइम पे हो जाएगा. सो विद इन अ 1 year span of time, right now you are nothing, you have nothing, you don't have any government job, but by next August you might be having the government job in your hand. It is not just the government job, most reputed government job of the state government, class 1 to officer. So this is the correct time for you guys to start the preparation for this examination. If you start the preparing for this examination from now onwards, then definitely you can achieve something good in your life by next August, or within a 1 year span of time. Now, this time, out of all the posts, this time GPSC published number of vacancies, almost more than 100 vacancies. And out of that 100 vacancies, the maximum vacancies are for the Assistant Commissioner of State Tax and the State Tax Officer. So see, if you are eligible to become a directly commissioner, assistant commissioner of a state tax, this is a very big opportunities. Like अगर डायरेक्टली आपको ये पोस्ट मिलता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है. उसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट,
district inspector land record, assistant director food and civil supply, chief officer nagar palika. Like most of the like metro cities, like if I'm talking about this cities like Vadodara having the corporation, so वहां पे क्या होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है कॉर्पोरेशन का. बट इफ यू आर इन द टाउन टाइप ऑफ स्ट्राइक देयर इज अ नगर पालिका. तो जहाँ पे नगर पालिका होता है ना, तो जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, जैसे वहां पे चीफ ऑफिसर होता है नगर पालिका का. तो यही एग्जाम से आप वो चीफ ऑफिसर भी बन सकते हो. देन द नेक्स्ट इज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर विच इज फॉर द डेवलपिंग कास्ट. एंड जीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशंस के नीचे एक लाइन मेंशन किया है कि these are the tentative vacancies and the more number of vacancies there are chances to increase in vacancies. So अगर चांसेस है इंक्रीज होने के बिफोर द एग्जामिनेशन, तो ये पोस्ट की वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती है. डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी एंड मामलतदार. सो यहाँ तक तो ऑलरेडी वैकेंसीज है ही, बट फर्दर यहाँ पे चांसेस है कि ये वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती है. सो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस. यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. Then you can become any of the officer which you can right now you can see on screen. अभी सिर्फ आप देख रहे हो सकता है ये आपके नाम के आगे लिखा हो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो. सो दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. नाउ सपोज if you are talking about this assistant commissioner of the state tax, if you want to join this procedure or join this post, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे एंट्री लेवल की पोस्ट क्या होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, देन टैक्स असिस्टेंट, देन सीनियर टैक्स ऑफिसर, देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, देन इनकम टैक्स ऑफिसर स्पेशल एजेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे आता है आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी. तो ये सब आपके जितना आप यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको 5 जंप करने होते हैं बाय वे ऑफ प्रमोशन अगर यहाँ पे आप अपॉइंट होते हो. बट ये एग्जाम ऐसा है कि डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स. ठीक है. देन यू कैन बिकम द डेप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर. वो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहता है आपका पोस्ट इंक्रीज होता रहता है और आप धीरे धीरे आगे की पोस्ट पे जाते रहते हो. बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास के डायरेक्टली आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रिक्रूट हो रहे हो. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जाम स्ट्रक्चर, के प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे होता है. सो प्रिलिमिनरी एग्जाम इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू पेपर्स. one is all about the GS1 and second is your GS2. if you are talking about the GS1, दोनों पेपर आपके 200 मार्क के रहेंगे और दोनों पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर ईच. ये मॉर्निंग में 10 से 1 रहता है आपका पेपर और ये आपका रहता है 2 to 6 सॉरी 3 to 6. अब पहला जो पेपर रहेगा वो दोनों पेपर से बात करें तो इंग्लिश में भी होगा और गुजराती में भी होगा. सो देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर, यू कैन अपीयर योर एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द लैंग्वेज. और दोनों पेपर का जो पैटर्न रहेगा इट इज अ OMR टाइप, सो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पैटर्न और OMR टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज देयर. ओके. एंड वन मोर थिंग, द सब्जेक्ट्स व्हिच यू नीड टू रीड. तो पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आपको करने, हिस्ट्री, कल्चर, quant aptitude and the fourth one is your Indian polity. ये चारों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं. लाइक इस तरह से 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द GS2, वहां पे कौन कौन से 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर. तो 4 सब्जेक्ट इन पेपर 2 and 4 subject in paper 1. सभी से 50-50 questions होंगे. So 200 questions from paper 2 and 200 questions from paper 1. और हर एक questions 1 मार्क का रहता है और नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3. So इस तरह से पूरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का आपका स्ट्रक्चर रहेगा. इट्स ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस. ओके. सो यहाँ पे आपकी वेटेज कौन से पेपर में ज्यादा है, आप कौन सा पेपर अच्छे से कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंडेड है. इफ यू आर गुड इनफ इन पेपर 1 और गुड इनफ इन पेपर 2, आपको देखो अभी मैं आपको आगे कट ऑफ दिखाऊंगा. आई विल शो यू द कट ऑफ, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट यू आर गुड इनफ इन ऑल द सब्जेक्ट्स. सो यू नीड टू डिसाइड योर कोर सब्जेक्ट और योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, and also you need to decide your weak subject. So that's why we are preparing the student for this examination, because students
don't know their weakness and strength, and don't know how to prepare. They always try to finish all these 8 subjects, but this is not a requirement of the examinations that you need to finish all the 8 subjects and read number of books for this examination. No, this is not a requirement. You need to only stick on the limited sources and limited subjects. So for that we are here, that how to prepare for these examinations, and we are preparing the students in by same way, so a student can crack the examination with a smart and hard work both. Okay. Now, as I mentioned, the history, the syllabus of the history is very vast: ancient history, medieval history, modern history, and the history of the Gujarat. So these are the limited source of the histories which you need to go for. Culture and heritage, again, the culture of India as well as the culture of Gujarat are both going to be covered in this part. Constitution, polity, social justice, and international relation. Then this is a general mental ability. Okay, so it's cover the quant, logical reasoning, data interpretation, DI. This kind of questions are there in this general mental interpretation. So we for 50 question, 50, 50, 50. So here first paper of 200 mark. Now second paper, again Indian economy and planning, 50 question, geography, 50 question, science and tech, 50 questions, and current event means current affair, 50 questions. So how many number of months you can go for the current affair, like previous 12 months, 6 months, 8 months? This is the important thing. Geography, again Indian geography as well as the Gujarat geography. Economy, Indian economy, as well as the some portion of the Gujarat like budget and socio-economic review. You need to refer this thing. Okay, so these are the 4 subjects of paper 2. Now, in mains examination, there are 6 papers of 150 marks, and you can write your examination in English as well as the Gujarati, and each paper having the 3 hours of time. Now, the one paper contain 150 marks. So you can see 3 question of 10 question of 3 marks, 6 question of 5 marks, and 9 questions of 10 marks. And you need to write your answer. The preliminary examination was the objective type, and this examination is a subjective type. तो आपको यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके, सो ये 150 मार्क का आपका पेपर स्टाइल रहेगा. अब उसके अंदर कौन कौन से पेपर होंगे? द फर्स्ट पेपर ऑफ गुजराती, second paper of English, third paper of essay writing, and the fourth, fifth, sixth is a GS 1, 2, 3. Again, GS 1, 2, 3 being the same syllabus as a prelim, except quant aptitude, like a history, culture, geography, polity, economy, current affairs, science and tech. All these subjects again covered in GS 1, 2, 3. And the essay are also similar or related to GS 1, 2, 3 and the current affairs. So if you are preparing these 3 subjects, then you can easily write all the GS paper as well as the essay paper. Okay, and finally your merit will be from 900 marks. 150 multiplied by 6 paper, so 900 marks. And if you clear the mains examination, then you are eligible to appear for the interview in Gandhinagar in GPSC Bhavan. So 100 marks for the interview. So 900 plus 100, grand total become 1000 marks. So अगर आप 1000 मार्क्स से जो मेरिट में आने के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो अगर आप अचीव कर लेते हो, then you can become any of the officer in Gujarat government. Now again the syllabus of the GS1, history, culture and geography. GS2, polity, public administration and governance, and ethics. Now see, this preparations also teach you the ethics. What is honesty? What is attitude? What is aptitude? So this preparations is not limited for the exam perspective only. This is a life-changing preparation. If you are preparing for this examination, definitely if you crack the examinations or not, it is a secondary thing. But definitely you can become a good citizen, good human being after preparing for this examination. So this is the main objective of designing the syllabus of the either of the civil service examination, GPSC, UPSC, or any of the state PCS. They are designing a syllabus in a such a way that you can become a good human being or a good citizen. So that's why we are preparing the student, or we are emphasizing more on the is true for the students to prepare for this examination. So this examinations preparation can help you in any of the field, irrespective of either of your graduation field. You are in the commerce background, arts background, medical background, engineering background, doesn't matter.
because everywhere you require ethics, everywhere you require aptitude, everywhere you require attitude, everywhere you require the knowledge of general awareness that what's going on surrounded to you. So this examinations preparation give you all this thing. So there is no other option for you guys except to preparation for start to prepare for this examination. Now, again, the syllabus of science and tech. Science and tech, like what is the role of ISRO? What is the role of DRDO? ISRO क्या कर रहा है? DRDO क्या कर रहा है? Why? What is the role of government in COVID-19 sector? Or what is the role of government in pharmaceutical sector? Like you can see that who can regulate the prices of the different drugs, of the pharma drugs? Because we need to understand that our population is not afford the medical treatment. So how you can, as a bureaucrat, how you can form a policy for all the people, either it is the poor people or the rich people, and how you can give more emphasis to cutting out the cost of the medical operations as well as the medicine, and how we can improve the percentage of the our spending of the GDP in the medical and education sector. So all this will be covered under the syllabus. So for that, you require the intelligence, you require the dedication, you require the confidence. While appearing for these examinations, preparing for this examination, you are performing in the sector. In all this factor, you require all this thing. Now, just see the cutoff. Out of 400, if you are scoring nearby 30% mark, nearby 30% mark, then you are eligible to write main examination. Suppose अगर आपको कॉलेज का भी कोई एग्जाम क्लियर करना होता है तो you need to score 40 to 50% mark. But here you can see you need to just score 30% mark. इतने मार्क्स तो आप ला ही सकते हो. और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनपे तो सोने पे सुहागा है, because you are getting the 33% reservation as a female candidate. So you need to just score nearby 100 mark, which is almost 25% mark or 1/4 of the mark. अगर इतना मार्क्स ही कम लाना है आपको तो आराम से आप ला सकते हो. दिस इज नॉट ऑल अबाउट के मतलब इतना डिफिकल्ट है. ये तो मतलब आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो और आराम से. दिस इज अ कप ऑफ टी फॉर यू गाइस. एज अ मेल कैंडिडेट यू नीड टू स्कोर ओनली 30% एंड एज अ फीमेल कैंडिडेट आपको तो 25% ही मार्क लाने. तो मतलब आपको तो 33% रिजर्वेशन मिलता है. इट इज लाइक अ सोने पे सुहागा. ओके, तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जामिनेशन. आराम से आप क्रैक एग्जाम कर सकते हो. रिस्पेक्टिव ऑफ योर लाइक इफ यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हो सकता है कि आपका कट ऑफ वेरी करेगा. बट यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर अ 400 मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, देन आपका टारगेट होना चाहिए 150 मार्क्स. इससे ज्यादा कट ऑफ जाता ही नहीं है. अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेके भी मतलब अगर हम चले थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके भी चले तो भी आपको 150 मार्क लाने. तो आप आराम से ला सकते हो 400 में से 150 मार्क. ठीक है, तो कॉलेज में आप आराम से मतलब 90% लाते हो, 80% लाते हो. यहाँ तो आपको सिर्फ 30% लाना है. सो दिस इज वेरी इजी फॉर यू. ना इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल कट ऑफ 1000 including 900 marks of the mains and 100 marks of the interview, then see the cutoff 465 marks, which is almost 46%. Again, this is not a 50%. यहाँ पे भी 50% से कम मार्क्स है. एंड इफ यू आर अगेन इन अ फीमेल कैटेगरी, आपको सिर्फ 458 मार्क्स लाने थे. यहाँ पे भी आपको फायदा है. सो दोस हु आर द गर्ल्स कैंडिडेट, तो उनको तो प्रिपरेशन करना ही चाहिए और एग्जाम देना ही चाहिए. ठीक है. एंड ऑल्सो मेल कैंडिडेट आपका भी देखो ओनली 46%. सो दिस इज नॉट अ बिग डील. You can easily crack the examination. Now, many of the students are having the doubt that when to start preparations, why to start preparations. So if you are in the right now, if you fill up the form of examination, आपने GPSC क्लास 1-2 का एग्जाम का फॉर्म फिल अप कर दिया है, and now you want to start your preparation, we are going to commencing new batches from 15th of September. First demo class is from the September 15th of September. So those who want to pursue the crash course, जैसे मैंने बताया कि 8 सब्जेक्ट है, बट 8 सब्जेक्ट में से हर एक चीज नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है. So that's why we have the one design a syllabus and the course structure, and we have launched a one crash course of the 270 hours. We were going to finish all your syllabus in this 270 hours before the 8th of January, before the preliminary examination. So हम पहले आपका प्रीलिम से एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और 270 घंटे में
और आप उसके लिए अच्छे से प्रिलिमिनरी एग्जाम दे पाओगे. But suppose those who have not filled up their form and those who want to pursue their preparations, so they can also start the preparations next year के लिए. So they can also join our regular batch of UPSC GPSC, which will going to be commencing from the September end. So वो पूरा एक साल का preparations रहेगा. तो वो एक साल के अंदर आपको हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे. और यहाँ पे जो क्रेश कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे डेली नंबर ऑफ आवर्स यू नीड टू स्पेंड मोर. So we are going to launch one crash course from 15th of September. So जो ये साल ही एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहते हैं, for them it is a good opportunity. You can join our new batch from 15th of September. And for I will give you the contact detail at the last. If you want having any kind of doubt or how to join demo lecture, how to attend demo lecture, or which kind of study material we are going to provide you. If you any kind of doubt, we have the contact details. I will provide you at the last. There are few why you need to start your preparation at the we can say that at the age of early age. You have the number of examination in front of you. You can see this Ansar Ahmed Sheikh. He cleared the examination at the age of 21, and he's the son of auto rickshaw driver. So this is not a exam of elite people. ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही एग्जाम क्लियर कर सकते. If you are ready to preparations, if you are lean towards the preparation, then definitely you can crack this examination. So there are a few more examination. Tina Dabi, again she cleared the examination age of 22. Safin Hassan, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये एग्जामिनेशन 2018 में क्रैक किया था और साथ में यूपीएससी भी क्रैक कर लिया. अब उनके पास दो ऑप्शन था, यूपीएससी में जाना या जीपीएससी में. सो दे डिसाइडेड टू गो विद द यूपीएससी एंड राइट नाउ अभी गुजरात कैडर में आईपीएस ऑफिसर है. एंड स्वाति मीना नायक, again she cracked the examination at the age of 22. So see, this is the age where you need to clear the examination, age of 21, 22, 23. So you have number of opportunity in the promotion. जितना कम एज पे आप क्लियर करोगे उतना ज्यादा प्रमोशन में हायर पोजीशन अचीव कर सकते हो. So as I mentioned that we are going to start one batch for this GPSC examination preparations from the 15th of September, and the features of this batch are we are going to conduct the classes online as well as on offline mode. So no need to worry that you need to regular attend offline classes only. If you miss some days, then you can also attend the online mode. We are going to cover full syllabus in 270 hours. Then regular test series will be there on regular wiki, flexible timing, and a well-equipped class that we have the smart facilities like smart board and everything. So there is no issues in the online classes also. Then the multi-language study material. We are going to provide the Gujarati material as well as the English material. So those who want to appear their examination in English or as well as in Gujarati, we have the facilities for both these things. And we have the trained staff to provide you proper guidelines and how to clear this examination. So we have the trained staff in the trained faculties who are going to teach you in this particular course. Okay. This is the particular vacancies of the GPSC जो उन्होंने official published किया था. So you can see the number of vacancies and different opportunities in this sector. And the preliminary examination on the 8th of January, and the mains examinations is in the 2nd, 9th, and 16th of April. And as I mentioned that one of the line is mentioned over here, okay, यहाँ पे और भी vacancies add होने के chances है. So these are the vacancies plus more vacancies will going to be add over here. So this is a good opportunity for you guys to start preparation for this examination. And this is the basic structure of the course. As I mentioned that 270 hours of the particular course is designed, and we are going to like we kept the fee very minimum 6,000 rupees only for 4 months of fee. और बहुत मिनिमम फी है. बाहर कहीं पे भी अगर आप देखोगे सेम कोर्स 30-35 हजार से नीचे अवेलेबल नहीं है. बट दिस इज फॉर द PU students only. So we have kept very minimum 6,000 rupees only, and we are going to cover each and every subject in Gujarati as well as in the English. And right now I am also having we are having the one more faculty of competitive examination cell. So I invite Akshay sir. He will give you some brief idea and some brief knowledge about the GPSC in next 5 to 10 minutes. Akshay sir. Hello. Yes, am I audible? Yes sir. Okay. Okay, I share my screen and then I start. Okay, so just let me stop my screen.
Okay, it is visible now, sir. Okay, so we talk about the GPSC awareness. Okay, so first of all, some student doesn't know about the GPSC. What is the GPSC? Am I audible now, sir, right now? Yes, sir, clearly. Okay, okay. So some students doesn't know what is the GPSC and how we fill a form of GPSC. First, I want to say GPSC basically is a public service commission, state public service commission. They provide to a job, and it is a like that consultancy, like key central agency for a it is a state agency for a GPSC and a central agency like a UPSC. तो जीपीएससी का काम क्या होगा कि वो आपको उसके पोर्टल पे जाके यू हैव टू गो ऑन जीपीएससी and OJS, GPSC OJS, you have to go on GPSC OJS and apply. Okay, तो वो वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है और अप्लाई में डिफरेंट वैकेंसी आपको दिखती रहेंगी. ओके, अब फुल फॉर्म ऑफ जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, तो ये हमारा जीपीएससी का फुल फॉर्म रहेगा. देन वी टॉक अबाउट द मेन थिंग्स. गैस कैडर. अब गैस कैडर दैट मींस ऑल द क्लास 1-2 वैकेंसी, ऑल द क्लास 1 and class 2 vacancy, 2 vacancy. Okay, everyone want to be a class 1-2. So what is the class 1-2 and what is the different procedure? हम रियल में बात करते हैं कि गुजरात कैडर यानी कि गुजरात गैस कैडर का मतलब क्या है? गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस. अब आप सर ने जैसे बताया, एज पर प्रीवियस टॉक सर ने बताया कि गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन में आपने डिफरेंट वैकेंसी देखी होगी. अब वो वैकेंसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई तो डीवाईएसपी, डेप्यूटी कलेक्टर. ओके, डेप्यूटी कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है तो डीवाईएसओ. यस, देन मामलतदार, हम बोलते हैं मामलतदार, टीडीओ, डीडीओ. ओके, टीडीओ डीडीओ. उसके अलावा वेरा यानी कि हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर. यस, इनकम टैक्स ऑफिसर. ऑल आर इंक्लूड इन दिस गैस कैडर. उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट. यस, डिपार्टमेंट ऑल आर इंक्लूड इन अ गैस कैडर. ओके, अब गैस कैडर के अंदर जो भी वैकेंसी होती है वो पूरी वैकेंसी के लिए एक ही एग्जाम होती है. कौन सी एग्जाम है? जीपीएससी क्लास 1-2, 1 and 2. और इसके 3 फेजेस होते हैं. हम बोलते हैं सबसे पहले क्या होता है कि प्रीलिम्स. ओके, फिर होते हैं मेंस. ओके, एंड इंटरव्यू. These different 3 phases for this exam. If you are doing a very good preparation at that time, these 3 phases are clear only first time. Otherwise you cannot able. But if you are going on a very good phase, मानो कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सभी स्टेप्स आपको पता है और आपने 2-3 बार ट्राई कर चुके हो आगे भी, तो आप ये प्रिपरेशन के साथ जा सकते हो. सर ने सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर ली कि जनरल के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उस सब्जेक्ट का कैसा प्लानिंग करना है, वो हम आपको ये सीसी सेल में सिखाने वाले हैं. राइट, तो ये प्रीलिम्स एग्जाम आप कैसे क्लियर करते हो, किस तरह आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना वेटेज देना है, उसके बारे में. इफ your prelims is clear, then we talk about a mains. मेंस में कितने पेपर आते हैं, कौन से पेपर में ज्यादा वेटेज है, कौन से पेपर में किस तरह की प्रिपरेशन करनी है. देन वी टॉक अबाउट अ मेंस एंड इंटरव्यू. 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है फॉर अ जीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए. जीपीएससी हमारी जो जनरल वैकेंसी है उसके लिए. तो कुल मिला के ये सब का हमारा वेटेज बनता है. देन वी टॉक अबाउट अ टेक्निकल एग्जामिनेशन. What is the technical examination?
तो ये दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन अ जीपीएससी वैकेंसी, ये भी एक जीपीएससी भी है। पहले तो क्या होता था कि जीपीएससी देनी है, उसका मतलब क्या होता था कि जीपीएससी, तो जीपीएससी में पहली जीपीएससी हमारी जनरल होती है, कि जिसमें हर एक, यानी कि इसमें एनी ग्रेजुएट हमारा एग्जाम दे सकता है, एनी ग्रेजुएट। ओके, तो हमें बेनिफिट तो मिलता है कि हम एनी ग्रेजुएट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर सिविल इंजीनियर then you are giving a GPSC technical, but which GPSC? गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस की आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, एंड उसके बाद ये टेक्निकल में, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस में हर एक टेक्निकल आ जाता है, यानी कि सिविल हो तो सिविल की वैकेंसी गिरती है, मैकेनिकल की भी वैकेंसी आप इसके अंदर गिरती है, यानी कि इसके अंदर होती है। अब सिविल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हम बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग तो हम 17 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि रेलवे, ओके, वाटर रिसोर्स, यस, फिर हमारे म्यूनिसिपालिटीज, राइट, वो नर्मदा, R&B, ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं। उसके बाद मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में भी RTO, GWSSB, ओके, R&B, फिर उसके अलावा भी हम बोलते हैं यूजीवीसीएल, ये सब में भी हमारी वैकेंसी गिरती रहती है। RTO में, GWSSB में, R&B में, UGVCL में मैकेनिकल की वैकेंसी गिरती रहती है। तो इसमें भी 100 मार्क्स का जो कॉमन जो जीपीएससी एनी ग्रेजुएट में सिलेबस होता है, सेम वैसा सिलेबस इसमें भी होता है। तो अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रिपरेशन एट दैट टाइम, यू हैव टू टेक अ बेनिफिट फॉर बोथ थिंग्स। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती तब तक आप जीपीएससी जनरल के लिए प्रिपरेशन करो। जनरल के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपके ये 100 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। मानो कि 100 में से 100 नहीं आते तो मैं बोलता हूँ 70%, 60% वेटेज आप मान के चलो तो भी सिक्योर हो जाता है। तो ये सब चीज आपके लिए बेनिफिट आगे प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा पेपर स्टाइल, तो हम पेपर स्टाइल 3 तरीके की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल जीपीएससी में कैसा होता है, टेक्निकल में कैसा होता है उसकी बात करेंगे। तो जनरल जीपीएससी में क्या होता है कि 200 मार्क्स इस तरह से 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, ओके। एंड टेक्निकल में 300 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। अब ये 300 मार्क्स का जो भी है उसमें हमारा एप्टीट्यूड आ जाएगा, हमारा अवेयरनेस, सभी जो 100, यानी कि हम बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस जीए आ जाएगा। फिर बोलते हैं हमारा पॉलिटिक्स आ जाएगा, ओके। फिर हमारा साइंस आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। ये सब कुछ 100 मार्क्स के अंदर आ जाएगा, जबकि इसमें हमको 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और पूरा सिलेबस हमारा जनरल ही रहेगा, ओके। और इसके 300 मार्क्स का, अगर आप सिविल के एग्जाम देते हो तो सिविल का आएगा 300 मार्क्स का, या आप मैकेनिकल की एग्जाम देते हो तो मैकेनिकल का आएगा, यहाँ पे 200 मार्क्स का रहेगा। यस, ये टोटल बना के 300, ये टोटल हमारे 400 रहेंगे। तो इस तरह से पेपर हमारा निकलता है, ओके। अब कट ऑफ की बात सर ने जैसे बताया कि कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहता है। जनरल का कट ऑफ आपको सर ने बताया, बट टेक्निकल कट ऑफ की मैं बात करता हूं तो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है कि 55% से लेके 60% तक ही मेरिट गया। मानो कि 300 है तो 180, बट सिविल के लिए 130 से कभी ये ग्रेटर देन नहीं हुआ, आउट ऑफ 300 कभी भी नहीं गया। So if you prepare for a civil engineering, if you prepare for a mechanical engineering, then you understand कि minimum cutoff is a 55% or 60%.
डन, ओके। फिर अनदर कैडर कि सर मानो कि हम प्रिपरेशन करते हैं, इफ वी आर गोइंग फॉर अ प्रिपरेशन, अगर हम 2022 में पास आउट हो गए तो जॉब वैकेंसी की क्या, हाँ, क्या कंफर्म है कि जॉब आने वाली है? तो जीपीएससी हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट से अपनी जॉब की वैकेंसी की, उनकी जो भरने लायक जगह होती है वो मंगवा देता है। बट अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ कि उसके अलावा 52 निगम होते। निगम मानो कि क्या, निगम का मतलब क्या है कि जैसे कि ये जीएमडीसी, गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जीएमडीसी, जीएसआरटीसी, तो ये भी एक निगम निगम है। जो एसटी हमारी बस वगैरह चलती है उसका, जीआईडीसी, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ये हमारा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, यानी कि जो भी हमारे जो जीआईडीसी जो प्रोडक्शन वगैरह जहाँ पे होता है, बड़ी बड़ी जीआईडीसी का नाम आपने सुना, उसमें भी जो वैकेंसी निकलती है, ये जीएनएफसी, गूडा, जीएसआरडीसी, गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऐसे 52 कॉर्पोरेशन है, इसकी भी वैकेंसी कौन निकालता है? जीपीएससी निकालता है। और जीपीएससी इसके अंडर में काम करके ये अलग अलग, मानो कि आपने कोई बार प्रिपरेशन कर दी है, इफ यू आर डूइंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन, देन यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब, बट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन रहेगी क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है और आपके रिलेटेड वैकेंसी जैसे ही गिरेगी। कई कई वैकेंसी ऐसी होती है कि एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। So right now, if right now you are doing a private job and you are taking a 3 years experience, 5 years experience based on a MBA, based on another job, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये सब वैकेंसी इस तरह से काम करती है, राइट? देन व्हाई जीपीएससी प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट। अब ये राइटर टीचर एग्जाम्पल, अभी ही एक वैकेंसी निकली थी प्रोफेसर के लिए, ओके, प्रोफेसर की, और गवर्नमेंट में प्रोफेसर की, गवर्नमेंट में प्रोफेसर की। बट इसमें आई थिंक मुझे याद है तब तक 130 से ज्यादा वैकेंसी थी। आई कैन नॉट एबल टू से एग्जैक्ट वैल्यू, बट 130 से ज्यादा वैकेंसी थी। और इसमें टीचर का एक्सपीरियंस भी चाहिए था, टीचर का एक्सपीरियंस भी चाहिए था। और गुजरात, मुझे बहुत खुशी के साथ आपको बताने की ये जरूरत है कि जिन जिन टीचरों ने अच्छी अच्छी प्रिपरेशन की थी उन लोगों ने ये एग्जाम क्लियर की है। तो आपको जैसे ऐसा होता है कि हम 2 साल मेहनत करते हैं, हमारी एग्जाम तब नहीं निकली, तो उन्होंने, उनका भी ऐसा ही था। वो 5-10 साल से जॉब करते थे, 5 to 10 ईयर्स से जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में स्कूल टीचर थे या प्राइवेट जॉब में स्कूल टीचर थे, तो भी इनकी ये जगह पे सिलेक्शन हुआ है 130 से ज्यादा। मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे ये वैकेंसी के बारे में नहीं पता एग्जैक्ट, बट 130 से ज्यादा ही लोग इसमें सिलेक्ट हुए। तो मानो कि आप, ये जो भी लोग सिलेक्ट हुए वो क्लास 2 में सिलेक्ट हुए, तो मानो कि क्लास 2 में आपकी सैलरी 60,000 अराउंड हो जाती है, ओके। तो ये एक टीचर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मानो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो आप धीरे धीरे ऐसे ऑनलाइन, यानी कि जो भी अलग 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 क्लासेस है, जैसे कि अपना सीसी सेल है, तो सीसी सेल से जुड़ते हो तो उसका फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, तो आप जुड़ सकते हो इस तरह से, राइट? अब देन आई टॉक अबाउट एट लास्ट कि इफ यू आर डूइंग फॉर अ प्रिपरेशन आइदर जनरल, मानो कि मैं आपको एक बेनिफिट सिंपल सिखा देता हूँ कि जनरल प्रिपरेशन करते हो आप, ओके, मानो कि आप जनरल प्रिपरेशन करते हो, जनरल प्रिपरेशन करते हो, ओके, और आप टेक्निकल प्रिपरेशन करते हो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ओके। तो जनरल प्रिपरेशन में आप जो 400 मार्क्स के लिए मेहनत करने वाले हो, वो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स देगा। अगर यहाँ पे आप 400 में से मानो कि 300 ला दिए या 250 लाए, तो मे बी श्योर इस एग्जाम में आपको 70 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अगर 70 नहीं आते तो 60 आते ही आते। तो अब आपको टेक्निकल में कितने लाने होंगे? 60, तो 120। ये टोटल पेपर हमारा है 300 मार्क्स का, ये टोटल है हमारा 400 का।
तो इसमें भी आप पास होगे और टेक्निकल में भी आप पास होगे। अगर टेक्निकल में आपकी ग्रीप जनरल पे है तो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप टेक्निकल वाले हो, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं टेक्निकल वाला हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा सिविल का 120 तक मेरिट जाता है और मुझे सिविल में 2 से 3 सब्जेक्ट ही आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जनरल पे ध्यान दूंगा। जनरल पोर्शन दैट मीन्स ऑल द थिंग्स, हमारा इतिहास, भूगोल, मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, हमारा डेली न्यूज, वो सब इंक्लूड करा के मैं प्रिपरेशन करूंगा और इसमें मार्क्स लाऊंगा। तो इस तरह प्रिपरेशन करते हैं तो दोनों में हमें बेनिफिट होता है। मानो कि कोई मैकेनिकल वाला है, वो मैकेनिकल वाला जनरल की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि आरटीओ की वैकेंसी डेली नहीं आती, हर साल नहीं आती, तो उसको वो आरटीओ की वेट नहीं कर पाएगा, तो वो जनरल प्रिपरेशन करेगा। जब भी आरटीओ की वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी रॉक करेगा, यानी कि उसमें भी वो अच्छे मार्क्स लाएगा। बट आरटीओ का हर बार मेरिट थोड़ा अप आता है, क्यों? क्योंकि वो जो बंदे हैं वो जनरल में फुल मार्क्स लाते हैं और टेक्निकल में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दैट्स व्हाई हर साल आरटीओ का मेरिट थोड़ा अप जाता है एज कंपेयर टू सिविल। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वाई जीपीएससी, क्यों जीपीएससी करनी है? बिकॉज ऑफ जीपीएससी राइट नाउ, जीपीएससी इज crack, if you want to crack a GPSC, it is a simple for as compared to another state। मानो कि आप एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन देखो, छत्तीसगढ़ देखो, मध्य प्रदेश में देखो, राजस्थान में देखो, ये सब की कंपैरिजन में अपना पेपर एकदम इजी आता है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग वाला बंदा हूँ, मैंने जीपीएससी भी दी है, आरपीएससी भी दी है और एमपीएससी भी दी है, और ये सबकी टेस्ट सीरीज भी मैंने यूज की है। तो मुझे मालूम है कि एमपीएससी की टेस्ट सीरीज, आरपीएससी की टेस्ट सीरीज एज कंपेयर टू जीपीएससी इजी होती है। यानी जीपीएससी की जो क्वेश्चन है वो एज कंपेयर टू एमपीएससी, आरपीएससी इजी रहते हैं और उसमें मार्क्स लाने भी इजी रहते हैं। तो इसीलिए अभी हमारा जीपीएससी एज कंपेयर टू दूसरे से कंपैरिजन में अभी बहुत ही उसका लेवल कम है, मानो कि उसमें आप जल्दी से निकल जाते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट बनता है। ओके, सो प्रिपेयर एंड ज्वाइन टू अस, यानी हमारे साथ जुड़ो, हमारे सीईसी के साथ जुड़ो, तो आपको बहुत फायदा होगा। और हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी भी है जो आपको प्रिपरेशन करवा सकती है, राइट? Okay, if you have any question, please. Okay. Yeah, thank you, Akshay sir, for this information. So, guys, if you have any kind of questions and you want to join us at the CEC, you can visit us at the CEC Competitive Examination Cell, New Subhash Chandra Bose Bhavan or New Agriculture Building near Tagore Bhavan B Hostel, or we can say room number 122 on ground floor. And you can also note down our number, cell number 93289200063, 93289200063, and you can visit us at Subhash Chandra Bose Bhavan, room number 122. So thank you very much. Hope you will join this particular course and you will excel in your future. So these courses are not limited to government job preparations. They also increases aptitude and attitude. So all of you are welcome to join our course at CEC. Thank you.